What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to another gameplay video of Hogwarts Legacy। Hogwarts Legacy के लास्ट वाले एपिसोड में हमें यहाँ पे जो इससे पहले वाले जो विजार्ड्स थे हमें उनके बारे में पता लगा था कि उन्होंने यहाँ पे जो था मैनकाइंड की किस तरीके से हेल्प करी थी। एंड वहाँ पे भी एक गर्ल थी जो उन एंशियंट मैजिक्स को जो थी देख सकती थी एंड एग्जैक्टली हमारे जैसे थी बिल्कुल। वो भी 5th ग्रेड में आई थी एंड हम भी 5th ग्रेड में एडमिशन लिया था हमने हॉगवर्ट्स में। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर थी एंड आज के इस एपिसोड में हम स्टोरी को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और है जो हमें डिस्कवर करना भी बाकी बची है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम इस ब्रिज तक यहाँ पे आए थे एंड यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेशन था हमने उस पर पार्टिसिपेट करा था एंड हमने प्रैक्टिस सेशन को जो है कम्प्लीटली जो था विन भी कर लिया था। आज के सारे एपिसोड में हम आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं एंड देखते हैं भाई यहाँ पे हम और क्या क्या चीज़ें जो है करने वाले हैं इस एपिसोड में। फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि इसके साथ हम और इंटरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं एंड लूकस के साथ यहाँ पे जो हमारा मिशन अचीवमेंट है वो यहाँ पे देखोगे तो फिनिश हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं जाके देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो आगे का क्वेस्ट है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक हमारा चल रहा है अ गर्ल फ्रॉम यूकान एंड यूकांडियो, पता नहीं क्या है, मीट नेथी ओवर इन द लोअर हॉक्सफील्ड एंड एक ये एंड नीड टू अटेंड टॉट बाय प्रोफेसर क्लिक इन द ग्रीन हाउस। मैं इस वाली क्लास को पहले यहाँ पे जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हमें जो है कुछ नए स्पेल्स जो है ना हम उनको सीख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, 250 मीटर दूर है यहाँ पे, तो हम मूव कर सकते हैं। एंड ये इस पे मेरे ख्याल से ना मैं यहाँ पे जो अपना लेवियोसो ओके वेट इसको वर्क करना चाहिए था ना। ओके तो ये फायर वाला ही था एंड यहाँ पे मुझे एक और जो है फील्ड गाइड देखने को मिली है। एंड मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे जो अपने पास स्पेल्स है ना उन स्पेल्स को जो मैं एक बार चेंज करना चाहूँगा। एंड वेयर इट इज़, ये हमारा शायद से लूमोस है, बिल्कुल लेवियोसो के लिए रेवेलियो एक आसपास यहाँ पे आया निशान। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट कहीं इस रूम के अंदर तो नहीं है कोई फील्ड गाइड। यहाँ पे एक चेस्ट मुझे देखने को मिला है, स्क्रेकरो की हेड, मेरे को साउंड आ रहा है तो जिसका मतलब आसपास ही कहीं पे एक फील्ड गाइड जो है ना छुपा रखी है। आई गेस ये जो रूम है ये यहाँ पे लॉक है एंड इसी लॉक रूम के अंदर ही हमें एक और जो है फील्ड गाइड का जो पेज है वो देखने को मिलेगा, जो कि अभी फिलहाल हमारा अनलॉक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो लेवल्स है किस तरीके से वर्क कर रहे हैं क्योंकि उन लेवल में लेवल 1 दिखा रहा है एंड हम अभी जो है आई गेस लेवल 3 या लेवल 4 पे हैं। एंड हॉल ऑफ हर्डिनियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हर्बोलॉजी जो है क्लास के हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, पता नहीं कौन सी क्लास है एंड शायद से मैंने इस क्लास को अभी तक एक बार भी अटेंड नहीं करा है ऐसा मुझे लग रहा है। श्योर नहीं हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने क्लास जो है प्रीवियस एपिसोड्स में जो है कर ली ही वो अटेंड, मेरे को याद ना हो बस। ये है शायद से वो क्लास की जगह। मैं काफ़ी तक क्लोज आ चुका हूँ इस क्लास को अटेंड करने के लिए एंड ये कोई मेरे ख्याल से बाहर ओपन में होगी क्लास ये शायद। एंड यहाँ पे मीटर जो है अभी काफ़ी कम दिखा रहा था बट मीटर जो है पे बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ। एंड एक मेरे ख्याल से हम कोई ग्रीन हाउस में जा रहे हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह जिस तरीके से आता है लग रहा है कि ग्रीन हाउस ही है ये। इस वाले क्वेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं। Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you. एंड इनका नाम भी जो है प्रोफेसर गार्लिक। Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio.
Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ओके तो इसलिए यहाँ पे जो था ईयर्स में बंद करने को बोला था। एंड अब ग्रीन हाउस की पूरी ग्लास ही जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो चुकी है। ओके The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. मुझे ऐसा लगा था शायद से यहाँ पे हर्मोलॉजी की क्लास में हम कुछ एक नए स्पेल को सीख सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। We'll be planting dittany at our potting tables. You can. I wonder if hippogriffs like knotgrass. चलिए प्रोफेसर से बात करते हैं, शायद कुछ स्पेल हो हमारे लिए। Well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. So, हमें यहाँ पे जो अपनी टेबल है उस टेबल पे जाके जो सीड्स हम लेके आए थे हॉग्समीड से उसे हमें प्लांट करना है। So, हमारे पास अभी एक ही सीड है बस, तो इस सीड को यहाँ पे जो है प्लांट कर देते हैं। तो ये 10 मिनट बाद यहाँ पे जो है ये रेडी हो जाएगा। तो 10 मिनट तक हमें क्या करना है? Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor ओके तो हम इन जो सीड्स हैं इनसे हम जो है पोशंस बना सकते हैं। Say we branch out. Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. एंड मेरे ख्याल से ये वो कैबेज है जिसको हमने शायद से प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज में आप लोगों ने देखा होगा, एंड मेरे ख्याल से ये वही कैबेज है जितना मुझे लग रहा है। Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. एंड तो हमारे कोई क्लासमेट के साथ हमें जाना था, एंड आई गेस ऊपर वेट कर रहा हमारा ये। Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. ये हिल कैसे रहा है? Up these stairs will take us there. इसे सिंपल जो है आराम से खड़ा नहीं हो जा रहा। एंड चलो हमारे मैप में मार्क आ गया कि हमें जाना किस साइड है, सो चलते हैं इसके साथ। एंड यहाँ पे वो है जंगली कैबेज। ओके नहीं, इससे भी अगले वाले में है। Thinks he's really good, but you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are, home of the Chinese. Go on. एंड यस ये कुछ वैसे ही कैबेजेस हैं Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. सो अब मुझे करना है अटैक द टारगेट विद द डमी चॉपिंग कैबेज, बट कैसे? ओके यहाँ पे आ चुका है, होल्ड लेफ्ट माउस बटन एंड आर। ओके तो वेट ये रुकना एक मिनट। सो मैंने इसको कर दिया, बट एंड यूज लेफ्ट माउस बटन एंड आर टू द टूल असाइन द चाइनीज, देन टैप लेफ्ट माउस टू असाइन द टूल्स। मैंने पे इसको असाइन कर दिया है आई गेस। ओके तो हमें उसे रिलीज करना था, बट अब फायर कैसे कर सकते हैं इसे? मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। Look at that.
ओके Anything they can get their mouths on. Mum planted सो some in her इस तरीके garden से हम last जो है year to keep the कैबेजेस को gnomes out. यूज कर सकते हैं एंड हमारे पास कैबेज नहीं काफी कुछ और था हमारे पास। ओके बाकी सारी चीजें लॉक्ड है अभी Those in फिलहाल। tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. ठीक है तो मैं इनको I'll क्या see you वापस back in उठा class. सकता हूँ एंड आई गेस मैं इनको वापस से जो है नहीं उठा सकता हूँ एंड इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ और कैबेजेस हैं एंड इन लीव्स है डिटर्नी लीव एंड क्या कुछ और है क्या यहाँ पे। एक बार रेवेलो का जरा यूज करा जाए। एंड इस रूम के पीछे यहाँ पे कुछ तो चीजें हैं। वेट मुझे यहाँ पे कुछ तो दिखा एंड यस ये रहा यहाँ पे फील्ड गाइड एंड मैं फिलहाल अभी लेवल 8 का हूँ। चलो मुझे भी कंफर्म हो गया है एंड आई गेस नहीं साउंड जो है ये साउंड आता रहता है जितनी बार यहाँ पे मैं रेवेलो का यूज करता हूँ एंड अभी नहीं आ रहा है उसका साउंड। तो चलो ये बची हुई जितनी भी चीज़ें सबको उठा लेता हूँ एंड यहाँ से जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है पिक कर सकता हूँ। फिलहाल आइडिया नहीं कि इन सब चीज़ों का मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा बट मुझे लगता है कि जल्दी मेरे को पता लग जाएगा कि इन सारी चीज़ों को जो है मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पे भी वैसे काफ़ी कुछ है। ये मेरे ख्याल से प्लांट जो है मेरा होने ही वाला है। इन सबको भी यहाँ पे निकाल दो। लीफ काफ़ी सारी यहाँ पे है। प्रोफेसर हमें देख रही है कि हम सब कुछ उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं और चलिए बात करते हैं डायरेक्ट के प्रोफेसर से। Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor. But looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. तो फिलहाल यहाँ पे जो प्रोफेसर के साथ जो हमारा क्वेस्ट था वो कंप्लीट हो गया है एंड यहाँ पे जो मैं 9 का हो चुका हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे एक और मेरे को मिलता हुआ, इसकी कोई फिलहाल जरूरत मुझे लगता नहीं कि है। ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो मैं यहाँ पे क्वेस्ट जो है एक दूसरा क्वेस्ट भी अवेलेबल था, तो पोशन वाला भी एक अवेलेबल है। सो यहाँ पे जो है पोशन की क्लास है एंड इसमें नेटी हैज आस्क्ड हैमलेट कॉल लोअर जस्ट ओके। तो ये वाला जो था इसके लिए शायद से ये हमें जो थी कहीं बाहर बुला रही थी। सो मैं इसको मार्क जो है लगा लेता हूँ। इसके अलावा गियर्स इन्वेंट्री में भी शायद कुछ सामान हमारे पास आ चुका। ओके हमारे पास जो लीव्स है काफ़ी सारे मैंने डिफरेंट लीव्स को जो है ना कैच करा है, तो ये उसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। एंड इसके अलावा गियर्स में ओके सो यहाँ पे एक नई हेडवियर आई है शायद से। एंड यस गियर्स में यहाँ पे स्पेशली जो है सर के गियर्स में उसको यहाँ पे नहीं पहनने वाला हूँ। ठीक है तो मैंने मैप में जो है मार्क लगा दिया, तो मैप अनलॉक करके देखते हैं कि मैप में हमें किधर जाना है। ओके हमें तो काफ़ी दूर जाना है फिलहाल, ये शायद से ओके ठीक है। मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे जो है वर्ल्ड मैप की ज़रूरत पड़ेगी। यस तो मुझे जो है वर्ल्ड मैप की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट ये सही रहेगा अगर मैं डायरेक्ट जो है ना मार्क लगाऊं, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ से इससे बाहर जाना है एंड जो लास्ट टेलीपोर्टेशन वाला भी है ना सो उसको मैं डायरेक्ट जो है यूज़ नहीं कर सकता हूँ। एंड इसको ब्लूम होने का टाइम होने वाला है, 4 मिनट बचे हैं वैसे इसको। चलिए इसको हम बाद में चेक कर लेंगे। एंड आफ्टर ऑल बाद में तो हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे आ सकते हैं। I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom.
strange. वेट, क्या ये ग्लिच हो गया है ना? यस, सो ये ग्लिच, सो ग्लिच फिलहाल अभी भी है। हल्के फुल्के ग्लिचेस हमें कभी कभार जो है ना गेम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एक मिनट में, यस, मेरे को लगा ही था यहाँ पे कुछ तो है हमारे आसपास, क्योंकि ऐसी जगह पे हमें जो है ना फील्ड गाइड्स की पेजेस जो है देखने को मिलते हैं। एंड वो देखो एक ऊपर की साइड भी है। फिलहाल ये अभी भी साउंड मेरे को आ रहा है। किसी ने मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला था पिछली वीडियो के कि जहाँ पे ये साउंड क्लिक आता है रेवेलो का यूज़ करने के बाद वहाँ पे जो है फील्ड गाइड के पेजेस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम मेरे को पेजेस जो है ना नहीं दिखे। ओके, तो फिलहाल अभी मैं जो है थोड़ा सा सही रास्ते पे जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके ठीक है, सामने की साइड मेरे को मार्क जो दिख चुका है एंड अभी वो काफ़ी दूर जाना है। एंड मेरे को यहाँ पे कुछ ना ट्रैवल के लिए भी देना चाहिए गेम के अंदर, क्योंकि जो डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे फास्ट ट्रैवल का अब थोड़ा ठीक रहेगा ट्रैवल का। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। एंड आई गेस ये एक अच्छा डिसीजन नहीं था कि मैं डायरेक्ट जो था ना इधर से जाने की सोच रहा था। एंड ऐसे मेरी इन्वेंट्री में काफ़ी ज़्यादा ये मून स्टोन्स भी हैं। एंड अभी तक मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मून स्टोन्स को। एंड मेरे को ऐसा लगता है ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है, बट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दूसरे स्टूडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो मेरे को आइडिया नहीं कि यहाँ पे जो नेथी है उसने यहाँ पे मैं बुलाया क्यों है। मेरे को ये इसके पास एक यहाँ पे फास्ट ट्रैवल की फ्लेम है। ये फ्लेम अभी तक मेरे को जो था नहीं दिखी थी। मैं फिलहाल काफ़ी तेज स्पीड से यहाँ पे रन कर रहा हूँ, बट एंड वो क्या मैं इसको खींच सकता हूँ क्या? रुकना एक मिनट, थोड़ा क्लोज आके देखता हूँ। यस, लेवियोस तो इन पे वर्क करता है। एक मिनट, यहाँ पे आगे मुझे एक नोट सा दिख रहा है इसके अराउंड। जाना तो वैसे मैं थोड़ा सा नीचे ही है, बट इसको ओपन कर सकता हूँ शायद। ये तो मैं एक तरीके से यहाँ पे चोरी कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे एक मार्क और है। क्या मैं यहाँ से नीचे उतर सकता हूँ? मुझे एक बार को लगा कि शायद मैं यहाँ से नीचे नहीं उतर सकता हूँ। क्या मेरे को इससे मारना है क्या इसे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो मार्क है वो इसी पे आ रहा है। एक मिनट, इस पे फायर का आपको फ्लेम दिख रहा है, सो कहीं ऐसा तो नहीं। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। एक मिनट, मैं जरा उसको भी यहाँ पे पुल करता हूँ। एंड देयर वी गो। एंड यस, ये डोर जो है अनलॉक हो चुका है। This looks intriguing.
तो इसके अंदर मुझे वेट क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैं इन कपड़ों के लिए आया था? उसके अलावा लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ और चीज़ है जो काम की है। यस, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी जो है काम का नहीं था। सो यहाँ पे एक पजल थी, यानी पजल भी कुछ मेरे को ज़्यादा हार्ड लगी नहीं। एंड आई गेस मैं शायद इधर से जा भी नहीं सकता हूँ ऊपर, क्योंकि जो मार्क है ना वो मार्क पीछे की साइड से आ रहा है एंड मेरे ख्याल से हमें उधर की साइड ही जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे नैथी ओवंस के पास चलते हैं। एंड क्लोज तो आ ही चुका हूँ मैं यहाँ पे। सो नैथी वाले को भी देखते हैं कि नैथी ने इधर की साइड हमें क्यों बुलाया है। वेट वेट, यहाँ पे इस पेड़ के पास ओके, ये मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा जो था मेरे ख्याल से कुछ ग्लिच विलिच के चलते यहाँ पे मेरे को वो चीज़ दिख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद से उस गेट के पीछे भी यहाँ पे जो है एंशिएंट मैजिक के जो रून्स के जो पोर्टल्स है ना, वैसा कुछ था। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ नैथी ओवन के पास। Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. ओके, सो यहाँ पे ना कुछ चीज़ों के बारे में जो ये भी शायद प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट हैं यार। Revelio. What's going on here? एंड देखोगे तो यहाँ पे रुको, यहाँ पे क्या मैं क्या सब कुछ चुरा सकता हूँ क्या? मुझे ऐसा लग तो रहा है कि मैं इन सबको उठा सकता हूँ। ओके, तो इधर काफ़ी सारा सामान है ना, तो उन सारे सामान को मैं पे चेक करता हूँ। रुको, यहाँ पे सामने की साइड कुछ डोर ओपन होते हैं। मैं फालतू में जंप करके जा रहा था ऊपर से। Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. ओके, I can answer तो any ये भी questions you have about the पोशन town. शॉप है। What do you have for sale? What can I help you with today?
सो इसके पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तो मेरे पे ऑलरेडी काफ़ी सारे हैं लीपिंग वाले इंग्रेडिएंट्स। यूजिंग फोकस पोशन दे आर कॉमनली फाउंड इन ओपन फील्ड। तो इसके बाद जितने भी यहाँ पे कॉमन टाइप के पोशंस ही हैं एंड ये है वो शायद से पोशंस। इसके अलावा मैं इन सारी चीज़ों को सेल भी कर सकता हूँ, अच्छे खासे मेरे को पैसे मिलेंगे। पर चलिए फिलहाल अभी मेरे को पोशंस की जरूरत है नहीं यार, मेरे को आइडिया भी नहीं पोशंस को हम किस तरीके से जो है ना यूज़ करने वाले हैं। Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. But Mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. but you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here. तो यहाँ पे एक मैप में एक मार्क हो रहा है जो फिलहाल अभी आया है कि हेल्प द स्ट्रेंजर I never एंड thought Ramrock's loyalists would go this. Pardon me. Okay, Is यहाँ पे एक और everything goblin नहीं है। all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. Revelio. Wish it had been under better एंड उस circumstances. कार्ट के अंदर है पानी के अंदर, यहाँ पे शायद से इसके अंदर भी कुछ। एंड यहाँ पे एक मिशन आ रहा था गो टू द गॉब्लिन कैंप। ओके, तो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है क्योंकि प्रीवियसली ये भी कुछ और आ रहा था कि हेल्प द स्ट्रेंजर एंड वो स्ट्रेंजर इधर की साइड है ना। तो पहले मैं स्ट्रेंजर को हेल्प करके देखता हूँ। I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! ओके, सो यहाँ पे एक और ड्यूल। What's happening? उसे लग रहा था हमें कुछ आता नहीं है। Stop that at once. You die. वेट, ये कौन है? I'll watch the light go out of your eyes. ओह, सो एशवेंडर ड्यूलिस्ट। Stop right, hang on! We can hunt them off! I'm not going anywhere with you. You'll take this student off of my dead body! Levioso. Not enough! देखो, मैंने तो ब्रेक करा था, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। Tell Rookwood to find you himself. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Release me. You've made a... क्या मैं हार गया हूँ क्या? Just ओह, happened. चलो नहीं। I've never been accosted in such a manner and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return.
You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet And ये हमें कोई managed to secret figure बता रही है. out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. So यहाँ पे कुछ ये मर्लिन के ट्रायल्स की बात चल रही है. Chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. ओके, इसमें फायर नहीं लगती है. मेरे को लगा था ये फायर्स के लिए लगाया होगा. And get the Mallowsweet from the trunk. And रुको, कौन सा ट्रंक से मैं Mallowseeds? This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. रुको, मैं ये करूँगा कैसे लेकिन? सॉल्व, ठीक है वो मैं, ओके, तो हमें यहाँ सेंटर में रखना था इसको. My word! Did you see that? The vines disappeared. Incendio! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. ओके, तो मेरे को यही चीज जो है यहाँ पे बर्न करनी है, के करके. रुको, ये अलग. ओके, मेरे ख्याल से मैंने सबको बर्न कर दिया है. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Okay. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. ओके, तो चलो यहाँ पे ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है. एंड यहाँ पे एक मार्क मेरे को काफ़ी देर से ये आ रहा था, ये पर्पल वाला. चलो इसको जाके ऊपर जाके मैं चेक करके आता हूँ कि ये वाला मार्क जो है किस चीज़ का आ रहा है. बट हाँ, उसको अगले एपिसोड में कवर करेंगे, क्योंकि एपिसोड जो है अदरवाइज लंबा हो जाएगा अगर ऊपर भी कोई स्टोरी लाइन जो है चालू हो जाए तो. सो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे साउथ हॉगवर्ट्स रीजन में जाने के लिए. सो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस.